एक सेकंड से guys, just a second. I'm sorry, I did not know that I was on mute. Just a sorry, I was on mute and I was asking questions to you guys. If we have strong electrolyte, then on dilution, lambda m will increase slowly or exponentially, steadily or exponentially. Tell me. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे इंक्रीज होता है? धीरे धीरे इंक्रीज करेगा या बहुत ज्यादा हो जाएगा अचानक से? हाँ जी बताएं. Slowly. Slowly. Lambda m increases steadily. And in weak electrolyte, what is going to happen? On dilution, lambda m increases exponentially. ठीक है? Now tell me now, इसमें किसी का डाउट है क्यों इंक्रीज करता है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग में और वीक में क्यों बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है? आस्था, एड्रियल, फातिमा, हेशमा, कृष्णा, रीजन पता है आप लोगों को? व्हाई डज दिस हैपन? यस, हेशमा, टेल मी. हेशमा, डू यू नो द रीजन? Am I audible guys? फातिमा, हेशमा, क्या हो गया? फातिमा, रीजन याद आ रहा है आपको? यस फातिमा. Can you please unmute your mic and answer me? Fatima, Hishma, I'm asking you guys now. क्या mic नहीं on कर रहे क्या वो? Because dilution. Dilution. ठीक है, रिवाइज कीजिए, ठीक है ना? आप लोग को याद रहना चाहिए सारी चीजें, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा अभी. When we have strong electrolyte, it is कौन ज्यादा डिसोसिएटेड होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक? टेल मी, which is more dissociated, strong one or weak one? आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए ना, ये बात तो. Turn your mic on. Strong one. ठीक है. Now since strong one is already, अच्छा बाकी आप लोग को नहीं पता था, फातिमा, हिशमा? Yes, Fatima and Hishma, you did not know which is more dissociated, strong or weak? I knew, but then I forgot. आप माइक ऑन करके रखिए, फिर आप लोग तुरंत आंसर करना आप लोगों को, ठीक है? प्लीज कीप योर माइक ऑन. नॉट यू मी. Which is more अरे माइक ऑन कीजिए. हाँ जी फातिमा, हिशमा. हिशमा को क्या हो गया आज? ओके, which is more dissociated, strong or weak? Strong. Strong one. Dilution से क्या होता है? If I add more water, तो dissociation increases या decreases? Decreases. Dilution करने का मतलब क्या बताइए? What does it mean by dilution? Putting more water. Putting more water. So what is going to happen if we put more water? Ions को ज्यादा जगह मिलेगा रहने के लिए, yes or no, Fatima? Yes, sir. So dissociation will increase or decrease? Increase. Increase. Now which is already dissociated? Which is already dissociated, strong or weak? Dilution से पहले ही थोड़े से ही amount of water में which is 100% dissociated, strong one or weak one? Strong one. ठीक है. That means if you are going to add more water, then further increase in dissociation is not going to take place because it is already dissociated. Correct? Whatever Yes, increase will be there, that will be very low. And that is why on dilution, lambda m increases steadily. धीरे धीरे ना एक उसका range होता है. But in weak, since it is not dissociated already, if I am going to put on water, more water, then the lambda m is going to increase exponentially. Now, my request is that please read the notes अच्छे से. फॉर्मूला देख के आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री मत पढ़िए, ठीक है? कि आपने फॉर्मूला देख लिया हो गया केमिस्ट्री. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. प्लीज रीड द नोट्स, उसमें सब कुछ है कि स्ट्रॉन्ग वाले, स्ट्रॉन्ग पहले तो हमने यही बताया व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट इज वीक. Strong is the one which is going to dissociate completely. Weak is the one which is not going to dissociate completely. Strong, since it is already dissociated, is not going to dissociate on further dilution. That is why the lambda increases steadily.
In the weak, we have some of the particles are not dissociated. It is partially dissociated. So on addition of water, what is going to happen? The dilution is going to increase the dissociation, and that is why the lambda increases exponentially. Now for strong, you have one equation that will give you the graph. Lambda m is equal to lambda naught m minus a into root of c, and this gives the graph also. Please इस equation को एक बार देख के जाइएगा. This is Debye-Huckel equation. They may give you a graph. Root c, and this is lambda m. ठीक है? What is this point? Tell me, guys. What is this point? Is there any significance for this point? The red point, is there any significance? Sir, lambda naught. That is lambda naught. ये आपका lambda m होगा यहाँ पे. This is lambda naught, है ना? यानी क्यों lambda naught है? क्योंकि इसके ऊपर जा ही नहीं रहा, right? This is the molar conductance at zero concentration, है ना? When it is near to zero. That is why this is what lambda naught m, and it is following what the Debye-Huckel equation. When you look at the graph of weak electrolyte, the graph of weak electrolyte is going to be something like this. Okay, this is lambda molar conductivity. This is root c. Root c is the concentration. Now tell me, lambda naught किसका निकालना आसान है? ग्राफ से बताइए जरा, स्ट्रॉन्ग के लिए या वीक के लिए? Which one is it easier? स्ट्रॉन्ग के लिए. स्ट्रॉन्ग के लिए आपको कुछ मतलब और कुछ जरूरत नहीं, फॉर्मूला में ही हो जाएगा. But since we cannot, है ना? Since the graph here it is not touching and it is not going to give you the lambda naught m, that is why we have what rule, what law? Tell me, guys. एक law है, क्या law का नाम है बताइए? Colruy's law. Colruy's law. Very good. ठीक है. So Colruy's law is used to determine the limiting molar conductance of what? Limiting molar conductance of weak electrolyte. ठीक है. Colruy's law. इसका सिंपल सा कहना रहता है, if I have an electrolyte AB जो आपको देता है, let us suppose ऐसे पूरा क्या देख सकते हैं, AX and BY आपके पास अगर है, then it will give you X amount of A, Y positive and Y amount of B, X positive. एक सिंपल सा एग्जांपल इसका आप ले लीजिए, क्या लीजिएगा? Al2O3 ले लीजिए, even though it is not Al2O3 ले लीजिए, ठीक है? Now aluminium 3 plus कितने मिलेंगे? 2 moles, because here we have 2 aluminium, 3 oxygen, both of them will have 2 negative. सबको दिख रहा है, हाँ या ना बताएं सही से? It is following the same rule, AXBY वाला. Al2O3 है, you are getting 2 aluminium and 3 positive and 3 oxygen and 2 negative. Is that right? Yes or no? Please tell me. तो इसका Colruy's का सीधा सीधा कहना था, if you want to calculate the limiting molar conductance of AXBY, this will be equal to the X times limiting molar conductance of AY plus Y times the limiting molar conductance of BX negative. Is this clear? Yes or no? Please tell me. For example, if I have CH3COOH and it is going to dissociate into CH3CO negative and H positive. So the molar conductance of CH3COOH will be equal to the limiting molar conductance of CH3COO negative plus limiting molar conductance of H positive. Clear as a question? Please tell me, guys. Yes, sir. Okay. Now, for weak electrolyte, there is another term that is known as alpha. For weak electrolyte, degree of dissociation this is equal to lambda m, that means limiting molar, this is the molar conductance at a particular concentration divided by lambda naught m. ठीक है? This is when you have partially dissociated. Lambda naught m जब हो जाएगा, that is when
the weak electrolyte is completely dissociated. This is the formula for degree of dissociation. Degree of dissociation कैसे दिखाते हैं? Alpha से दिखाते हैं, which is equal to lambda m upon lambda naught m. Clear है? Yes or no, please tell me. हाँ जी बताएं. Is everything clear till here? Yes or no? Yes, sir. ये सवाल कीजिए. Conductivity of 0.001 molar acetic acid is 7.8 into 10 to the power minus 5 Siemens per centimeter. Calculates its degree of dissociation if lambda not is there. ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला है? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम. लैम्डा एम आपको कहां से निकलेगा? लैम्डा सॉरी दिस इज लैम्डा एम इक्वल टू व्हाट? कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन द मोलारिटी. प्लग इन कीजिए, अल्फा निकालिए. ठीक है, कृष्णा करेक्ट. Yes, Heshma correct. Astha correct. Waiting for Adriel and Fatima. Yes, Adriel correct. Correct, Fatima. एक second. 10 to the power. Fatima, can you please send your answer on my WhatsApp? Lambda m कितना है फातिमा, वैसे आप बताएंगी? Lambda m is equal to how much? Sir, lambda m, I got 7,800 into 10 power minus 2.
7,800 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो ये 78 हो जाएगा ना। हाँ जी फातिमा, Yeah, but I took it as it is. ठीक है, मतलब ये ऐसे आपको दिखता नहीं है कि 78 हो जाएगा। No, I know it will become 78, but then I नहीं took it like. नहीं, आई एम नॉट आस्किंग, आई डू यू नो नॉट, आई एम आस्किंग कि सीधा मतलब मेरे बताने पे दिखा या फिर ऐसे ही दिखता है आपको, अगर आप कोई चीज तरह से दिखते हैं तो। No, I can understand. अरे अंडरस्टैंड नहीं पूछ रहे हैं हम, अंडरस्टैंड तो 8 क्लास का बच्चा ही कर लेगा। हम ये कह रहे हैं आपसे, आपको तुरंत ये दिख रहा है कि नहीं दैट इट इज गोइंग टू बी 78 as soon as you write it down? No, I have to do the decimal अच्छा ये point and आप, then take. तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए आप, ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स में अगर आपको दिक्कत होती है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि एक दिन लगेगा, 1 घंटा लगेगा शायद, टाइम वेस्ट लगेगा आपको, लेकिन इट्स गोइंग टू हेल्प। 8 क्लास की कोई एक्सरसाइज ले लीजिए 8 स्टैंडर्ड का, ठीक है। नहीं आपने 8 स्टैंडर्ड में नहीं किया था ठीक से एक्सपोनेंट्स, 7th 8th में, फातिमा बताएं। यस फातिमा, हाँ जी फातिमा बताइए, नहीं किया था ठीक से एक्सपोनेंट्स? I don't remember. यू डोंट, ओके सो यहाँ पे लैम्डा एम आ गया आपके पास 78/390, ठीक है। अब कैंसिल कीजिए, क्या होगा? 39, हाउ मच, टेल मी। 39 का डबल होगा ना ये, यस और नो? हाँ जी फातिमा, It's 0.2. 0.2 आएगा ना, और आपका क्या आ रहा था, 2 इंटू 10⁻², ये क्या हो जाएगा? 0.02, ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। डिफाइन कंडक्टिविटी को छोड़ दीजिए, ये बताइए व्हाई डज दी कंडक्टिविटी यानी कि क्या है कापा ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन? दिखाया हमने ना, कंडक्टिविटी के बारे में लिखाया होगा दैट इट डिक्रीजेस बिकॉज on dilution it decreases because the number of ions per unit volume decreases, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है ना, अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रहे हैं तो उसमें जो भी नंबर ऑफ आयंस है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द डाइल्यूशन, ठीक है। सी नेक्स्ट, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी छोड़ दीजिए, ये बताइए why does the molar conductivity of HCOH increases drastically while that of HCONA increases gradually? Because क्या रीजन होगा? हाँ जी क्या रीजन होगा? COH is a weak electrolyte. This is a weak electrolyte and this is a strong electrolyte. Clear as a person, please tell me. Yes. Okay. एक सिंपल सा आपके पास एक सवाल आता आया था, हमने दिया था आप लोगों को, व्हाट इज अ फ्यूल सेल?
फ्यूल सेल क्या होता है? हाँ जी बताएं, व्हाट इज फ्यूल सेल? ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल यानी क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। हाउ विल इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? गैल्वेनिक सेल दैट generates electricity by combustion of fuel. Correct guys? Yes or no? Tell me. हाँ जी बताएं। Yes, sir. एक आपके पास सवाल है रस्टिंग ऑफ आयरन से, ये देखिए। गुड क्वेश्चन। रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम्स क्विकर इन सलाइन मीडियम, क्यों? When you will have saline water, that means you will also have Na plus and Cl negative. Correct? Yes or no? Tell me guys. यही तो Yes, फर्क sir. है वाटर और सलाइन वाटर में। क्या होगा आपके पास, है ना? और ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो आप लोग आयंस के बेसिस पे उसको ये कीजिएगा, डिफाइन कीजिएगा चीजों को, ठीक है? तो व्हेन यू हैव सलाइन वाटर, इन दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट देयर विल बी आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है? एंड द नंबर ऑफ आयंस will increase in saline water and that favors rusting. As increase in ions, increase in number of ions favors rusting. Rusting is electrochemical process, तो उसमें अगर जितने ज्यादा आयंस तो उतनी ज्यादा आसानी से रस्टिंग होगा। Then moving on. Why does the cell potential of mercury cell remain constant throughout its life? So because it uses up the hydrogen released from the electrodes. हाँ, बेसिकली क्या है, कोई भी आयनिक स्पीशीज नहीं यूज होती जो कि सोल्यूशन में है, ठीक है? जो भी अगर यू लुक एट द ओवरऑल रिएक्शन, इट does not include any of the ions in the solution, so, right? Because the overall reaction does not involve any ion in the solution. See some other questions. Fuel cells are preferred for production of electricity in thermal plants. देखिए, जब भी आपके पास ना थर्मल प्लांट्स, तो कोई कंपनी होगी, सही है? ऐसा नो, Yes, sir. कंपनी से रिलेटेड कुछ भी आए तो कंपनी को क्या चाहिए बताइए? Profit. प्रॉफिट, कॉस्ट कटिंग। सो इट इज कॉस्ट एफिशिएंट, ठीक है? सिंपल आंसर आपको इतना। एक और इसका रीजन ये रहता है
that when you have thermal plants they produce a lot of pollution, और उस हिसाब से फ्यूल सेल्स जो होते हैं उतनी ज्यादा पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी यूज थर्मल प्लांट्स में कौन से फ्यूल सेल्स को, दोनों को बैलेंस करने के, लेकिन मेन रीजन क्या है, इट इज गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। उनको जैसे फर्क पड़ रहा है कौन कितना पोल्यूशन कर रहा है। आयरन डज नॉट rust even if zinc coating is broken in a galvanized pipe. Why does this happen? देखिए जिंक की कोटिंग हम लोग करते हैं ना, जिंक की कोटिंग होती है गैल्वनाइज करने में। जिंक की कोटिंग अगर टूट भी जाए तब भी आयरन रस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है रस्ट? बिकॉज देखिए ये आपके पास हो गया, दिस इज आयरन, इसके ऊपर आपने लगा दिया जिंक, ठीक है, इसके ऊपर आपने लगा दिया जिंक। अब मान लीजिए बीच से टूट गया ये, ओके, बट स्टिल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब लड़ाई होगी दोनों में, है ना, कि व्हाट इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, जिंक ऑक्सीडाइज होगा या फिर आयरन ऑक्सीडाइज होगा, जिंक और Fe, करेक्ट? ये नो प्लीज टेल मी, दोनों में से ज्यादा जो भी रिएक्टिव होगा वही ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि अब तो दोनों आ गए ना, both of them are exposed to oxygen and both of them can get what, both of them can rust and both of them can get oxidized। तो कंपटीशन में कौन जीतेगा बताइए, जिंक Zinc. या Fe? जिंक जीतेगा, है ना। So what are you going to write the answer? Because zinc is more reactive, it will oxidize itself to protect iron, ठीक है, as zinc is more reactive, it will oxidize to protect iron। जिंक का एक सवाल बेसिकली मतलब काफी दिनों से आ रहा है, I think you will also get a question on zinc। Out of zinc and tin, which is whose coating is better to protect iron objects? बताइए क्या आंसर होगा, तुक्का मारिए कम से कम। जिंक। जिंक, ठीक है ना। अगर वाई नहीं पूछा तो आप वाई बताइएगा मत, ठीक है। जिंक, वाई पूछा है नहीं पूछा है, जिंक इज बेटर टू प्रोटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स, लिख दीजिएगा। व्हाट एल्स, एक ये सवाल है जो शायद कल हमने नहीं कराया था आप लोगों को, ये थोड़ा सा लंबा सवाल, टाइम लग सकता है, पढ़िए इसको आराम से आंसर कीजिएगा।
What they are saying, standard electrode potential of an electrode is greater than 0. यानी कि क्या, SOP या SRP, which is greater than 0? SOP और RP, tell me. Standard electrode potential दिया है, यानी कि क्या दिया है, SOP दिया है, SRP दिया है? SRP. SRP is greater than 0. ठीक है? That means easily reduced, correct? That means reduced form is more stable. ठीक है? Yes or no? हाँ जी बताएं। फिर उसके बाद किससे कंपेयर कर रही है, हाइड्रोजन से, है ना? तो हाइड्रोजन वाले में क्या होता है, व्हाट इज द रिडक्शन, H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2. इसका SRP जो होता है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 0 वोल्ट्स, करेक्ट? उससे ज्यादा स्टेबल है, तभी तो इसके SRP ग्रेटर देन 0 है. इज दिस क्लियर, यस और नॉट, टेल मी गाइस? हाँ जी Yes, sir. बताएं. ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर, reduced form is more stable compared to hydrogen gas. Clear सबको, आस्था, Adriel, Ishma and everyone? Yes, sir. Okay. Let us see some other questions then. अच्छा, एक और चीज, reducing power is directly proportional to SRP या inversely proportional, देख के बताइएगा, नोट्स में देखिए, बताइए, reducing power is directly proportional to SRP या inversely proportional to SRP? Inversely proportional. Very good. Inversely proportional. ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आपको, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. चलिए, आई हैव गॉट 10 मिनट्स. इसमें इस चैप्टर में कुछ और डाउट्स है तो बताइए, कुछ कर लेंगे. इफ यू गाइस एनी डाउट किसी कंसेप्ट में, या फिर कोई सवाल है जो नहीं बन रहा है. नो? So, जी सर, चल मी. so for this batteries with the different cells, dry cell, mercury cell. So there are so many reactions like at the anode and at the cathode. How to remember them? How to remember them? Yes, sir. So it's so confusing. I always leave such questions like in exams. It came 1-2 times, so then couldn't remember the reactions. हाँ, एग्जाम्स में आया कब, प्री बोर्ड में आपके? Yeah, even pre-board and the previous school exams also it came. And I, प्रीवियस like, स्कूल did एग्जाम five मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में? midterm, नहीं, midterm. मिड टर्म में. देखिए, what I have seen with the previous year CBSE questions, they are not going to ask you like the whole reactions वहाँ पे. Okay, जो एक reaction they may ask is for the rusting of iron. Okay, and what happens when zinc जब rust करता है तो क्या होता है? So those questions they can ask. ठीक है, but obviously those are जो भी आपके NCERT में जो भी reactions है cells के, those are a bit complex. तो उसमें आप basically क्या याद करके जाइए, एनोड में क्या है, कैथोड में क्या है, ये कर सकते हैं. Yes or no, आस्था, tell me. Yes, sir. Constantly if I revise then हो जाएगा. हाँ, तो बेसिकली आप लोग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिमेंबर व्हाट इज एन एनोड, व्हाट इज एन कैथोड. फिर क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए आ भी गया, रिएक्शन आ गया, है ना? देखिए, हर चीज की ना, आप अगर किसी को जितना भी वक्त दे रहे हैं, तो आप किसी और चीज को वक्त नहीं दे रहे हैं, करेक्ट? यस और नो? Yes, एक, sir. अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो आप चाय नहीं भी पी रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लाइक इफ यू आर
एक्टिंग अपॉन समथिंग, तो आप किस चीज को छोड़ रहे हैं? तो इन चीजों में आप अगर ज्यादा टाइम दीजिएगा, यानी कि किसी और चीज में आप टाइम दे सकते हैं, तो वहां टाइम नहीं दे रहे, तो हम बोलेंगे इतना टाइम अभी इसमें मत दीजिए, एनोड और कैथोड को आप याद कर लीजिए। आफ्टर दैट एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन करके यू कैन राइट द रिएक्शन, जो कि दैट इज गोइंग टू बी इनकम्प्लीट बट इट इज नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग। ठीक है, बेसिकली एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है। यू जस्ट राइट द आंसर्स ऑन दोस प्रिंसिपल्स, है ना। एंड दे हैव नेवर आस्क्ड कि इस सेल में क्या रिएक्शन होता है, रिएक्शन लिखे, दे हैव आस्क्ड फॉर क्या है एनोड में, क्या है कैथोड में, फॉर श्योर। ठीक है, इवन देयर इज वन क्वेश्चन, लेट मी जस्ट शो यू। So just remember anode and cathodes, nothing else. फिर आगे you can work on it. Anode में oxidation, cathode में reduction. Where was this question? Devanches cell का था। रस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। रस्टिंग आप लोग ना, चलिए जब तक आप लोग ये सवाल कीजिए, उसके बाद हम रस्टिंग को ये करते हैं, सेल वाला वो सवाल जो आप बोल रहे हैं ना, करते हैं। ओके एट्रियल। वो सवाल मिलेगा ही नहीं मिलेगा। What about others? बाकी लोग आंसर करें। एंड आस्था, if you want to, अगर आपको टाइम मिला, then you can remember the reactions of dry cell and mercury cell. But again, try to remember them in terms of anode and cathode. Anode and cathode पहले याद कीजिए, उसके बाद you try to write the reactions कि क्या हो रहा है वहां पे oxidation and reduction के बाद, and then you will get it.
What about others? बाकी लोगों ने आंसर नहीं किया, only Krishna and Adrian. Others guy, what happened? Yes, Fatima, हिश्मा ने तो कुछ नहीं बोला आज, लगता है शांत से बैठी हुई है बिल्कुल. हिश्मा, आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है क्या? Why are you so silent right now? Yes, हिश्मा. Yes, sir. तैयारी ठीक नहीं चल रही है क्या? शांत क्यों हो गए हैं आप इतना? Yes, tell me, हिश्मा. क्या वो प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आए अच्छे? No, sir, not like that. No such thing. Okay. Okay. Adriel is asking, sir, can you explain the इसका आंसर क्या होगा? फातिमा नहीं आ रहा आपको? Yes, Fatima, tell me. Astha, what happened to you? What happened to you guys? Sir, I don't know how to. अरे देखिए, आयरन कितने में ऑक्सीडाइज हो रहा है? कोरोजन में क्या होता है? जो रस्टिंग होती है ना, रस्टिंग को बचाने, रस्टिंग में क्या होगा? रिएक्शन होगा आयरन का. आयरन का यहाँ से कहाँ रिएक्ट करेगा? Fe से Fe2 प्लस, करेक्ट? Fe से Fe2 प्लस करेगा तो 0.44 वोल्ट्स. ओके. अगर इस ये नहीं होना है, इफ यू डोंट वांट टू डू दिस वन, Fe इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इजीली, उससे आसानी से कौन और ऑक्सीडाइज हो सकता है? X या Y? Which is going to get oxidized more easily? Why? We don't. कौन सा? Why, right? Okay. X से X2 पॉजिटिव. देखिए, हमको लगा इतना तो कम से कम देखा होगा आपने. What is this? SRP है, SOP है? SRP. SRP है, ठीक है. और आयरन का क्या होगा? रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा? Fe का Oxidation. इसको लगेगा 0.44 वोल्ट्स, राइट? उसी तरह से X और Y यूज करेंगे ना हम लोग. Y2 प्लस तो नहीं यूज कर सकते ना, वी कैन नॉट यूज चार्ज थिंग्स, राइट? यू विल आइदर यूज X और Y, ठीक है. अगर हम X से X2 प्लस जाएं, then what will be the standard oxidation potential? 2.36. 2.36. 2.36. और Y से जाएंगे तो 0.14. तो कौन ज्यादा आसानी से हो रहा है बताइए? X वाला या Y वाला? Why? अरे Y तो 0.14 इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है ना. इट इज गिविंग 0.14 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 2.36 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन बाय X, तो X ज्यादा आसानी से हो रहा है ना. व्हाट हैपेंड? भूल गए? पागल हो गए सब क्या? हाँ, The value is less. No, 0.14 is less, so it's getting easily इट oxidized. इज गिविंग ना. ओ माय गॉड. अगर E नॉट पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गिविंग इलेक्ट्रिसिटी और इट इज टेकिंग इलेक्ट्रिसिटी. Giving. गिविंग. अगर गिविंग है, मान लीजिए अगर E नॉट पॉजिटिव है, इफ E नॉट इज मोर पॉजिटिव, तो जो डेल्टा G होता है दैट इज माइनस NF E नॉट, डेल्टा G विल बी मोर नेगेटिव. सही है? Yes, sir. तो कौन ज्यादा आसानी से होगा रिएक्शन? X वाला या Y वाला? X. ठीक है, जो ज्यादा पॉजिटिव वो आसानी से. ओके. इन E नॉट it is giving more electricity, that is why it is more spontaneous. More electricity, more spontaneous. If it is asking for more electricity, then it is less spontaneous. If it is giving more electricity, then it is more spontaneous. Clear hai Astha? Yes, sir. Fatima, what about you? Yes, sir, it's clear. Clear? Okay. What Adriel was saying. Adriel, किसमें product of electrolysis जरा बताइएगा. Which cell? Tell me. Yes, Adriel. Inert electrolytes. अच्छा, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोड्स. हाँ, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स ना. तो यहाँ पे सबसे पहले बताइए
हाँ चलिए, AgNO3 है और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। प्लैटिनम इज व्हाट, इट इज इनर्ट मेटल, इनर्ट, दिस इज व्हाट, इनर्ट इलेक्ट्रोड। सिल्वर रहता तो एक्टिव होता, प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोड, Ag3 एक्वस है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसमें, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सारा तो कराया हुआ है ना आप लोगों को। Yes, Adriel, tell me. Yes, sir. देखिए, ये बताइए आप, अगर aqueous AgNO3 है, then you will have Ag plus and H plus, correct? Yes or no? Yes. ठीक है, बताइए। Ag is in what? छापा elements, yes or no? It is in छापा elements, correct? Yes, sir. तो इसका E नॉट पॉजिटिव, और हाइड्रोजन का क्या होगा, H2 गैस, हाइड्रोजन का E नॉट 0 वोल्ट्स, करेक्ट? yes or no? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, Ag वाला या हाइड्रोजन वाला, व्हाट इज गोइंग टू Ag. हैपन, या करेक्ट, Ag वाला, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, कैथोड, कैथोड में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट Ag। दूसरा है आपके पास, देखिए वाटर में होता है OH नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट, OH नेगेटिव, और दूसरा क्या है आपके पास, NO3 नेगेटिव। यहाँ पे आप बताइए कौन ज्यादा आसानी से मूव करेगा, OH और NO3, which is देखिए NO3 नेगेटिव इज व्हाट, पॉलीएटॉमिक, इसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, इट इज गोइंग टू बी वेरी स्लो, और ये आपको कुछ रिएक्शन नहीं देगा, इट इज OH इज गोइंग टू रिएक्ट एंड इट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, बताइए। OH रिएक्ट करता है तो क्या देता है आपको, यू विल गेट O2 गैस, ओके। 2 OH मॉलिक्यूल्स ले लीजिए आपके पास, अगर नहीं 4 OH मॉलिक्यूल्स ले लीजिए आप, है ना, टेक 4 OH मॉलिक्यूल्स, दो आपने ऑक्सीजन में निकाल दिए, प्लस यू विल गेट व्हाट, 2H2O, ठीक है। ये भी रिएक्शन आप याद कर सकते हैं, 4 OH नेगेटिव इज गोइंग टू गिव यू O2 plus 2H2O, ये वाला रिएक्शन होगा। सो यू विल गेट O2 इन द O2 इन द व्हाट, Anode. एनोड, है ना, कैथोड में वहां। डाइल्यूट H2SO4 में देखिए, कैथोड में तो बस एक ही रिएक्शन हो सकता है, यू हैव H2SO4, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट H प्लस आयंस यहाँ से भी, और वाटर से भी क्या मिलेगा आपको, H प्लस आयंस दोनों तरफ से मिलेगा। सो ओनली H प्लस आयन इज प्रेजेंट, तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इट इज गोइंग टू गिव यू हाफ H2, दिस इज गोइंग टू हैपन इन व्हाट, कैथोड, ठीक है। अब बताइए एनोड में क्या होगा, एनोड में आपके पास कौन से दो चीजें हैं, एंड इट इज ऑल्सो, प्लीज रिमेंबर, दिस इज व्हाट, डाइल्यूट सोल्यूशन, तो आपके पास SO4 2 नेगेटिव जो होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, इज दैट राइट, yes or no, tell me, करेक्ट है, Yes, sir. ठीक है। नाउ इफ इट इज नॉट इन लार्ज क्वांटिटी, देन व्हाट इज गोइंग टू रिएक्ट, क्या बचा, OH नेगेटिव बचा, yes or no, OH. Yes. राइट। तो आपके पास OH नेगेटिव का रिएक्शन होगा और आपको क्या मिलेगा, 4 OH नेगेटिव is going to give you O2 plus H2O, ठीक है। So basically you have to compare, और देखिए when you have one ion ना, ध्यान रखिएगा, one ion जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ठीक है, I नेगेटिव, ये सारी चीजें होंगी, then this will be preferred over OH नेगेटिव, ठीक है। OH नेगेटिव का हालांकि ऑक्सीजन बनने का E नॉट जो होता है, दैट इज गोइंग टू बी, वो आपको कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, एंड दिस इज गोइंग टू यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी, बट स्टिल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस विल बी प्रेफर्ड बिकॉज the formation of O2 it requires over voltage, and these are single ions and they move very easily, ठीक है। but if you have polyatomic ions such as SO4 2 negative, लेकिन अगर SO4 2 negative concentrated हुआ तो वहां पे ऑक्सीजन की OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, दैट इज व्हाई SO4 2 नेगेटिव इज प्रेफर्ड वहां पे। बट NO3 नेगेटिव हुआ
or if you have something at NH4, नहीं, what else you can have? हाँ, जैसे यहाँ पे आपके पास था SO4 negative which was in dilute solution. In that case also OH negative is preferred. ठीक है? Do you have any other specific doubt, Adriel? Products में? So then what will happen if it's concentrated H2SO? Concentrated H2SO4 में the SO4 negative is going to react. The product, so what will be the product? Notes complete नहीं है आपके? I remember like how. I don't understand. The reactions. Yes, sir. H2SO4 सबसे पहले बताइए क्या बनेगा इससे? You will get what? H plus, है ना? And HSO. H plus and HSO. HSO4 negative. ठीक है? These are two things that you are going to get. Now, after that, what is going to happen? HSO4 negative आपका या तो react करेगा if it is going to be what? If it is going to be very concentrated. ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, एक तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट मिलता है that is known as per sulfuric acid. क्या मिलता है आपको? पर Sulfuric acid. HSO4 negative is going to give you H2S2 and O8. This will be per disulfuric acid. ठीक है? This is for concentrated. पहले यहाँ पे HSO4 negative आएगा and then it is going to give you per disulfuric acid. बस यहीं तक लिखने की जरूरत है. वैसे ये सवाल कभी आया नहीं है. You can get the dilute one अगर आया भी तो, ठीक है? Concentrated आया भी नहीं है. Because it is not there in NCERT, neither in questions nor in the exercises. तो NCERT से बाहर वो नहीं पूछेंगे. So NCERT के टेक्स्ट में अगर कुछ नहीं है तो वो उसके क्वेश्चंस में रहता है. ठीक है? और अगर दोनों में नहीं है then CBSE has no role in asking that. Okay. And वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि when it is dilute it gives oxygen but when it is concentrated it gives per disulfuric acid. Why? So then you will say because since the concentration is lower in the case of dilute solution, OH negative get preference over HSO4 negative ions. ठीक है? तो इस तरह के सवाल वो पूछ सकते हैं. And what else? Anything else? No, sir. नहीं? So, हाँ जी बताएं. sir, now like the mock test, right? Yeah, which is tomorrow. हाँ जी. It is of 3 hours, one paper only, like one subject. नहीं और किसी का नहीं है मॉक? Okay, no, like it's one hour only, no, still. हाँ, it is still one So hour. full syllabus. नहीं है फुल सिलेबस. हमने मैसेज किया था 5 चैप्टर्स आ रहे हैं बुक 1. Okay. So it'll be 1 ठीक hour है? only, no? हाँ, इट विल बी One 1 hour ओनली. सेम चीज है. इसी वजह से ना देखिए एक घंटे का फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेने का कोई तुक नहीं बनता है. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 12 क्वेश्चंस एंड देयर आर 10 चैप्टर्स. ठीक है? तो ना ही तैयारी करने के लिए सही है ये, ना ही आपको एग्जाम देने के लिए सही है. ओके, सो दैट इज व्हाई अब हम ये आप लोग से बाद में पूछेंगे, एक बार आप लोगों का ये सब कुछ खत्म हो जाए कि कैन यू गिव एग्जाम लाइक फुल मॉक टेस्ट इवन बिफोर द एग्जाम ऑफ इंग्लिश, या फिर इंग्लिश एंड केमिस्ट्री के बीच में जो गैप है उसमें हम मॉक टेस्ट लें. और शुड आई टेक एनी डे आफ्टर 15th Feb और लेट अस से लाइक आफ्टर 17th या फिर 20 तारीख को ले लें. ठीक है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिटवीन इंग्लिश एंड केमिस्ट्री एग्जाम? शुड आई टेक अ मॉक टेस्ट बिटवीन देम? Yes, sir. That works. That would work, yes or no? Adriel, Krishna, what do you think? I think आप लोगों ने तो पहले भी कहा था कि चलेगा ये, right? Adriel?